अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स खुश आमदेद एक मरतबा फिर क्रिकेट क्लिनिक की एक न्यू एपिसोड के साथ साइम मुदस्सर आसिफ आपके सामने हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम बेसिकली रिव्यू करेंगे जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज हुई है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या प्रोज थे क्या कॉन्स थे। स्कोर लाइन तो आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट 4-1, बट आर देयर एनी पॉजिटिव टू टेक अवे फ्रॉम द सीरीज। कुछ बात कर लेंगे कैप्टनसी के इश्यूज कुछ हमें नजर आए, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं शाहीन की कैप्टनसी में। विल टॉक अबाउट द न्यू प्लेयर्स हु वर टेस्टेड, who were tried out. Saim was one of them. आजम खान another. तो उनका क्या, फरहान को भी मौका मिला, क्या उनको एक फेयर चांस मिला नहीं मिला, उनको परसिस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे गुफ्तगू कर लेंगे। एंड फाइनली विल मूव ओवर टू sort of द फ्यूचर सीरीज जो आने वाली है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इन अप्रैल, और उसके बाद मई में वी हैव अ सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो उस सीरीज के लिए क्या चेंजेस हम रेकमेंड करेंगे, ये हमारा ओवरऑल सort of ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज का। तो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट मी ओपन इट अप। तो कौन आप दोनों में से बात करना चाहेगा, एक बिग पिक्चर हमें टेक अवे दे दें, प्रोज एंड कॉन्स। लेट मी स्टार्ट ऑफ विद वन प्रो एंड देन यू कैन sort of build on that. So obviously given the score line, कुछ ज्यादा हम प्रोज की बात तो नहीं कर सकते, बट मेरे लिए एक स्लाइड प्रो ये होगी कि हमें कुछ आंसर्स मिल गए हैं कि बिकॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बात की थी लास्ट सीरीज में कि वी नीड टू एक्सपेरिमेंट, वी नीड टू गेट सम आंसर्स फॉर द वर्ल्ड कप। तो एक दो आंसर्स हमें मिल गए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें पता चल गया कि उसामा इज नॉट रियली रिप्लेसमेंट राइट नाउ फॉर शादाब। उसको चांसेस मिले, ही 0 for 51 इन गेम वन, बाकी गेम्स में भी कोई खास इंप्रेसिव नहीं था। So it seems that we really need to rely on Shadab getting his fitness back. So that to me is sort of one pro, is getting some answers in terms of what our composition needs to be. आगे बढ़ाते हैं, आप लोग बिल्डअप करो, क्या प्रोज एंड कॉन्स आप देखते हो बिग पिक्चर सीरीज में। I can. I'll start. Okay. Assalamu alaikum. So again, I don't have any message boards or anything here at all today, but it's easy to get depressed, like you said, 'cause we lost 4-1. But if this was just a bilateral series with no major tournaments coming in the near future, then I would be a lot more concerned about what's going on in the here and now. But we have the World Cup coming. It's only in 5 months, and so it's very important to have the perspective that the results of this series don't matter. And this is not me just showing sour grapes. I said this even before. Go to the previous episodes. I said this before. Understand, if we won this series 5-0 and then we're eliminated in the first round of the World Cup, this would not matter at all. If we lost this 5-0 and then gone and win the World Cup, this will not have mattered at all. The results of this do not matter. What matters is the development of the players. We're 2 years removed from being in the finals of the T20 World Cup. We don't have to have a major overhaul. We have some core pieces of our team that are in place, and we need to find complementary pieces around them. We know that injuries happen, unfortunately, so we need to have a good backup, build up our dugout, build up our stores, and know where we are. And also, we have a new captain, so he has to find his way and figure out how he's doing and how that develops in time for the World Cup. So again, the result 4-1, sure, it's discouraging, but to me, it doesn't matter. And for me, the big thing is, look, we have main players on this team. We know Rizwan, Babar, Fakhr, Iftikhar, and Shaheen. I think of the five that are there. They're going to be there no matter what. Ironically, they're the only ones who played all 5 matches. It would have been nice if some of them were rested so we could try these others out. And we can talk more about the pros and cons. I think one positive I think we can talk about is the fact that Zaman Khan got a good run and looked good. He looked the part. And I think Abbas Afridi, who I confess I had not seen much of before, when fit, he was pretty good. He was, deceptive. And Wasim Jr. Shaheen Afridi was, if luckily, maybe the fourth best pace bowler we had during this series. Another big question, and I know we'll talk about these new guys at length. Our big question was, where do you put Azam Khan if he's in the field? Does he can't be put anywhere where he, unfortunately. As a keeper, do we lose something by going from Rizwan to Azam? And I think Azam actually, held good count of himself, at least as the wicket keeper. So those are some good things.
and I think Mudassar can take over. But the really big thing, and I think we'll go into there's some nuance here, is the questions that Simon was raising about the players that we wanted to try. Were we really able to test them out in a satisfactory manner? I don't think we were, for reasons that we'll discuss here in a bit. I think a lot of that still is up for question. But we did get some answers, and we do know where we are. Much better to know where we are now than in the middle of the World Cup. ठीक ठीक। मुदस्सर आप इसको ऐड करोगे जो आसिफ ने बात की है। यार मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मुझे तो काफी डिसअपॉइंटिंग सीरीज थी ये ओवरऑल। उसका इट्स नॉट नथिंग टू डू विद द रिजल्ट। वन। वो 5-0 भी होता तो इट डजंट मैटर। मसला ये हुआ कि आई डोंट सी एनी चेंज। अब ये पीपल डोंट रियलाइज के लास्ट सीरीज T20 की बायलैटरल पाकिस्तान जो जीता था ना, वो 2021 में जीता था वेस्ट इंडीज से। They lost against Australia 1-0, then Afghanistan, चलो उसमें प्लेयर थोड़े वो जरूरी था करना। खैर they lost against Australia, Afghanistan, England, न्यूजीलैंड से जो होम थी वो ड्रॉ हुई थी 2-2। तो पांचवी सीरीज टेक्निकली बायलैटरल वी कुडंट विन, दैट्स अ बिग डील। और बीच में जो World Cup से भी ना। हाँ, अब ये तो बायलैटरल सीरीज की बात कर रहे थे ना। अब बीच में वी लॉस्ट एशिया कप फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, और जो एक चीज जीते हैं ट्राई नेशन न्यूजीलैंड में, वो इसी ग्राउंड में था। स्लो पिच थी और स्पिनर्स डिड वेल। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि वी द स्ट्रेटजी हैज नॉट चेंज। ऑल्दो शाहीन आया है, मगर वी डोंट सी सेम प्रॉब्लम वो जो वाइट बॉल में हमें वर्ल्ड कप में हो रही थी एग्जैक्ट। तो खराब चीज ये हुई कि बैटिंग तो हमारी जैसी थी वैसी खेल रही है। और जितने हम मेजर टूर्नामेंट्स हारे हैं या प्रॉब्लम हमें बैटिंग में होती थी, वो हम बात करेंगे कि वही हमारा वी नेवर स्कोर्स अबव पार, वी स्कोर पार और बिलो पार, और बिलो पार ही हुआ है फाइनल में। जिस तरह इसमें पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने 200 रन 2 दफा दिए हैं इन T20 हिस्ट्री। पाकिस्तान कंसीडर्ड 200 ओनली ट्वाइस। तो आपने की सीरीज में 2 दे दिए। बॉलर वो वर्ल्ड कप से जो पिट रहे हैं वो अभी तक पिटे जा रहे थे, जब तक हमने चाचा को बॉल नहीं दिया और नवाज को शुरू में स्पिनर्स को। तो ओवरऑल वही कैच छोड़ रहे थे। या साइम अयूब वाज एक्चुअली रियली गुड कि उसने 8 कैच पकड़ लिए, ही डिड एक्सट्रीमली वेल। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तो नहीं थी। फिर टीम में जो साइड में अभी हम बात करेंगे, वो एक साइड में अलग ड्रामा और शो चलता रहता है ऑन एंड ऑफ। कभी कोई चेयरमैन रिजाइन कर रहा है, कुछ प्लेयर्स दे आर नॉट ऑन बोर्ड लुक्स लाइक। तो मेरा तो ख्याल है कि दिस सीरीज वाज डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल। अच्छा चलें, उसके अंदर कुछ डिफरेंट राय आपको मिल गई। देयर इज मोर ऑप्टिमिज्म ऑन वन साइड, bit more pessimism on the other, बट कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम देना चाहें तो इसमें क्या चीजें हैं जो अब हम गोइंग फॉरवर्ड हमें चेंज करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यंगस्टर्स की। राइट, सो यंगस्टर्स में साइम को चांस मिला, जमान खान को चांस मिला। अ, अब खैर चांस पूरी तरह मिला नहीं मिला वो एक और गुफ्तगू है, उस पर भी बात कर लेते हैं। इनका क्या फ्यूचर देखते हैं आप गोइंग फॉरवर्ड। इनमें से कौन से प्लेयर्स हैं जो आप परसिस्ट करना चाहोगे अपकमिंग सीरीज में, और कौन से ऐसे हैं जो आप कह रहे हो कि ओके ट्राई कर लिया है, नाउ लेट्स मूव बैक टू टू मोर ट्राइड एंड टेस्टेड। साइम पे पहले आ जाते हैं। इज देयर कंसेंसस अमंग्स अस ऑल थ्री के यस टुवर्ड्स द लैटर पार्ट इतना उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो उसका स्टार्ट था एंड एक्चुअली जो लास्ट टेस्ट मैच से ऑनवर्ड्स उसकी जो फॉर्म नजर आ रही थी, अग्रेशन नजर आ रही थी, उसकी बेसिस पे ही नीड्स टू बी परसिस्टेड विद। क्या आई कहेंगे थिंक साइम के बारे में। प्लेयर्स तो बाद में आते हैं ना। सबसे पहली चीज जो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड इज द माइंडसेट। अगर माइंडसेट अगर वो पुराना चल रहा है तो इट डजंट मैटर, आप किसी को भी खिला दो इस टीम में। शाहीन जिस तरह कलंदर की कैप्टनसी करता है ना, ही नीड्स टू बी दैट शाहीन। he needs to shut down the voices around him. Unfortunately वो पुराने मुझे वो पुरानी स्ट्रेटजी आखिरी गेम में आई डोंट नो हुज आइडिया वाज इट। इट वाज बिट लेट के जब एलन मारे जा रहा था, देन ही ओपन विद नवाज। नवाज could have opened way earlier। तो स्पिन 12 ओवर स्पिन के हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कभी बाबर ने भी 12 ओवर कराए होंगे। तो दैट वाज अ बिग प्लस। आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर कैप्टनसी चेंज हुई है
then we have to have a new mindset, new strategy, और शाहीन can do it. जैसे टेस्ट में शान की स्पॉट नहीं थी, मगर we saw some difference, like in like a strategy or the style of captaincy. So that's the first thing needs to be done with Shaheen. He has to be like completely different kind of a captain than we had a planning before. अच्छा, प्लेयर पे आते हैं। साइम अयूब का नाम लिया ना आपने। साइम यार मिक्स था। देखो, एक तो ये कि उसको ही वेंट ऑन द टफेस्ट टूर। एक सीजन खेला है फर्स्ट क्लास का। वी नो व्हाट ही कैन डू इन सीपीएल। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक ही पास्ड वन इनिंग, ही प्लेड रियली गुड इन द लास्ट टेस्ट मैच इन द सेकंड इनिंग। देन इधर भी पहले गेम में 200 चेस कर रहे थे। ही गेव यू 27 रन ऑन 8 बॉल्स। तो पाकिस्तान 15 ओवर तक पाकिस्तान गेम में था। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया। तो साइम आई थिंक इज अ प्लेयर टू कीप। और वो फिर आगे टीम के ऊपर है कि हाउ दे यूज हिम, मगर साइम डेफिनेटली इज द वन टू कीप। और आसिफ भाई, आप उस पे कुछ, साइम पे कुछ कहेंगे? I mean, so the point that I'm going to make, because it's hard to talk about these individuals without talking about the captaincy. Look, Shaheen is a new captain. I get it. I don't know if his goals were aligned with our goals or the PCB's goals of evaluating these players. Because here's the thing. If you're going to evaluate these players, I mean, it's easy to look on paper and say they had 4 matches, they did well or they didn't do well. Watch the matches and see. If you are a batsman, right, and you're being evaluated, then win the toss and bat first. Let them set a total. One thing we haven't mentioned is our bowling was atrocious. Mudassar mentioned we gave up 200 runs twice. The third match we gave up 195. Exactly. So when you're evaluating a batsman and he comes in batting second, when you've won the toss, but you still come in batting second from the get-go, needing 11 or 12 runs and over, right, to score. That is not, I mean, okay, look, if you excel in that situation, great, of course. But that is not a fair way to assess a batsman. And so that applies to Azam. It applies to Saim. It applies to Bichara, even, Farhan, all of them. Hasibullah Bichara came in the last match, So if you are, because we know what the bowlers can do. They've all bowled to some extent. These are brand new batsmen you put in the team. You've got to give them a clean slate and say, we're batting first. Win or lose, whatever. You build an innings, show us what you can do without the pressure. Right now, obviously, you want him to bat with the pressure, but every time he won the toss, he kept bowling first and bowling like crap, like ghatiya crap. Every over, there were 2 or 3 balls down the leg side. I cannot understand what this bug is with Pakistan bowling now, the last, series or two, when you have the fine leg in and then you insist on bowling down the leg side. It was atrocious bowling. You can say, okay, they weren't used to the conditions. The grounds are shaped oddly, but this is bowling 101. It doesn't matter where you're bowling. If your fine leg is in, don't bowl it on the legs. It's not rocket science. So again, it's very, I mean, look, obviously on paper, Azam did not score very well. Saim had looked very good in the first innings. He got run out, unfortunately, and that seemed to, spell the end for him. And then, he only got to bat first once and he didn't score. So that's there. But the same thing you can say for Saim, the same thing I say for Azam, the same thing I'd say Saibzada Farhan did okay, but it's really hard to assess a new batsman when you come in those conditions. And that's where I think Shaheen really missed a trick. You really missed a trick. We won 4 tosses, right? I think 4 tosses, and he chose to bat first once. Yeah. So, it puts you behind the 8 ball before you even get to the crease. Oh yeah, that's where the captaincy comes in. जब 4 मैच में अच्छी तरह पिट गए, तो how did we salvage? किस तरह he brought Nawaz on in power play. Then he gave it to Chacha bowled once and he's man of the match. So that tells me it's a very slow thing. So, I think to answer the question, Sam, what you're asking is, I don't think we can say, which is a frustrating thing, whether it's Hasibullah, Azam, or Saim, or Farhan. I don't think it's fair to say that they're failures. I don't think it's fair to say that they're successes. I think it's the grade is incomplete for all of them. And that a lot of that lands, unfortunately, squarely on the shoulders of our captain for the way he chose to evaluate them. But there are a lot of interest in the PCB, in the higher ups. There's this ongoing thing from former cricketers, from everyone, from captains who want to keep that vaunted holy grail of Babar Azam and Rizwan as an opening partnership.
and they're going to do anything they can to use this. And I actually feel like one advantage, and this is reverse logic, but I really feel like the way that we performed as openers with Syme there actually validates our approach of saying that you have a pinch hitter at the top. Because what was the criticism? If you have a pinch hitter and gets out early, are Babar and Rizwan going to be able to bat that they have batted in the past, or are they going to feel the pressure? I think we saw in every instance that they actually did okay. And so you're raising the floor in that even if you lose the batsman quickly, you still have reliable Rizwan, you still have reliable Babar, and you can still build up a decent total. But the roof is raised, the ceiling is raised, because you know if Syme takes off, then you can bat out the match and you can bat your opposition out. So this showed that even when they fail 4 times, 5 times out of 5, we're still able to hold our own with our batting. We have enough depth. So I actually think that the failures validates the inclusion of Syme for all matches to come. एक चीज और मुदस्सर कि आप यार कुछ हर कोई एक और चीज people are missing here. Barber looks gold and one down. उसने in first 3 matches he scored 350s. He Yeah. had 6 50 प्लस consecutive की एवरेजेस 50s at number 3. What happened? He became captain and started to open. That's where things. So he was doing fine at one down too. अच्छा हर कोई कह रहा है कि ये ओपनर नया भाई तो फखर से क्यों नहीं ओपन कराया इस सीरीज में दैट्स वेयर वी ड्रॉप द बॉल और ट्रस्ट मी इफ फखर वाज ओपनिंग विद हसीबुल्लाह और साइम दे वुड हैव प्लेड मोर एग्रेसिवली मुझे लगा जैसे साइम पहले मैच में आया ही आई थिंक हिट द बॉल ऑन फर्स्ट और सेकंड बॉल अगले मैचों में by the fourth game he started to block and he was getting out and blocking the ball so you see a big difference और रिजवान उससे बात भी नहीं कर रहा था तो ideally they should have promoted Fakhr as an opener क्योंकि he's already an established and experienced player and on the other end you try a youngster like Saim or whatever who needs to be tried so if you ask me they just messed up the whole experiment I'm not gonna even count this as an experiment I think it was intentionally Sabotage. yeah sabotage or butchered But I and think this is अच्छा nonsense उसके अंदर सॉरी ये चीज जो आप बात कर रहे हो उसमें ओपनर्स में रिजवान ने एक पोजीशन फिर भी रखी हुई थी दूसरे एंड पे हमने एक्सपेरिमेंट किया साइम को भेज दिया आखिरी में हसीब को भेज दिया अब आई एग्री विद यू कि हमें एटलीस्ट फखर और साइम की कॉम्बिनेशन ट्राई करनी चाहिए थी दिस वाज द टाइम बट गोइंग फॉरवर्ड यू नो क्या फिर रिजवान का आप क्या रोल देखते हो आई आई डू एग्री कि नंबर वन मोर और लेस बाबर ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है ही इज परफॉर्मिंग वेल बट फिर वेयर डू यू सी रिजवान आई मीन रिजवान को फिर आप क्या देखते हो क्लियरली 2 डाउन 3 डाउन डजंट रियली सूट हिम सो आइदर ही इज एन ओपनर या पोटेंशली फिर वही है कि अराउंड जो चाचा खेलता है उस यू नो 4 5 डाउन वही चीज नजर आ रही है जो आजम का वो था yeah, I mean, मेरे ख्याल में, and we said this before, T20 cricket, you know, it's small bursts where you have to take advantage. And the power play is designed for aerial shots, for you to take advantage of the fielding restrictions. Rizwan doesn't do that. I mean, he'll play one of his, you know, square leg sixes, which is great and everything, but he's not designed to do that. Ideally, I would say put Rizwan lower down, you know, maybe at 5 or 6, because one thing which we saw in this that we haven't seen before, he's very good at nudging the ball and getting singles. He rotates a strike very, very well. That's something you need when you come lower down. You can rotate, strike, no dot balls, and then when the boundary ball comes, hit it. Realistically, I don't think they're going to do that. I think we have it set up very nicely to where if you must have Rizwan and Syme open, then you have a like for like replacement right there. If Babar gets out, I mean, if Rizwan gets out, let Babar come in at number 3. If Syme gets out, send Fakhr in. So you have a like for like replacement, and it's a perfect situation. You can, you know, adapt to the match situation. They're not going to do that either. I think that's too earth-shattering for them. ये देखो ना जब पहले मैच में 200 चेस कर रहे थे आई वाज कन्विंस्ड कि फखर एंड साइम गोना वॉकड इन रिजवान साहब आ गए अच्छा अब मजे की बात है जो लोग रिजवान ने 190 की हैं ही डिडंट स्कोर एनी अदर 50 और उसका जो स्ट्राइक रेट है ना सीरीज का 130 है अगर if you guys recall Afridi 135 was the cut off to even get selected in T20 team हमारे भाई साहब नहीं मान रहे ये जिनकी भी जिद है 130 is you know Phil Allen का strike rate was 180 था
जो दूसरा था मिच मिच इज द सेकंड स्कोर मिच के व्हाट्स हिज नेम Mitchell, Daryl Mitchell. Darren डैरल Mitchell मिचेल he जिसको he रेस्ट किया played था with आखिरी मैच। yeah strike rate of 160 केन विलियमसन का 145 वैसे बाबर आजम वाज फाइन एट 140 रिजवान भाई तो सुधर ही नहीं रहा 38 ऑन 38 बॉल्स वो 60 बॉलों पे 9 अच्छा वो अगर मैच देखा हो ही वाज टेकिंग सिंगल्स इन लास्ट 2 overs ही वाज टेकिंग सिंगल्स वी हैड 5 विकेट्स डाउन तो वो तो इंटेंशन ही नहीं थी कि 150 क्रॉस करने की तो मुझे नहीं पता यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है कौन देखता है I do think Rizwan paces a chase very well. There've been more than one match where he's opened and he's taken us to the brink of victory, and he knows how to finish a match well, I think. So I think an argument could definitely be made for Rizwan coming lower down. But, we saw he's got a lot of power. He's got the ear of the captain, and that's not going to happen. So the next best thing is have Syme there and keep Babar at number 3. But this, see, when you have situations where you try these new guys and then you drop them after one match, which they didn't. To their credit, they gave them a long stretch. But even after 2, 3 matches, what happens is batsmen play for themselves. They don't play for the team. You have to tell Syme, you have to tell Azam, look, we've been through trial and error. We've done our Khush Dil Shah trials. We've done our Asif Ali trials. We've done our, we've been through there and we've learned that this is the group. I think I heard Shaheen or someone in the administration saying, we've identified our group of guys. yeah It's a question of finding the right combination. You tell these guys, unless you are absolutely atrocious, like Osama Mir, unless you're absolutely atrocious, you are the guys we are trusting with taking us to the World Cup. If you give them that faith, they know that they're not one performance away from being dropped. When you do that, you put that faith in the player. He plays for the country, he plays for the team, and you will bring out the best in that player. When you're on this whole thing about you get 1 or 2 bad matches, then don't bat like that, or don't play your natural game, or you're going to be out of the team, then you're never going to play for anyone except for yourself. yeah But और on that note, बात कर लेते हैं गोइंग फॉरवर्ड कि अब हमारी नेक्स्ट सीरीज जो आ रही है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। ऑब्वियसली द कंडीशंस वुड बी मच मोर सूटेबल फॉर अस, होम कंडीशंस अप्रैल के अंदर। वहां पे अब व्हाट सॉर्ट ऑफ, ठीक है स्ट्रैटेजी की तो हमने बात कर ली, नीड मोर नॉवेल्टी, हमें बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी अभी चांस देना चाहिए फखर को एट द टॉप। बट ओवरऑल टीम कंपोजिशन के अंदर बिग पिक्चर आप क्या देखते हो? डू यू थिंक इट्स टू अर्ली टू कॉल, विल हैव टू वेट फॉर पीएसएल, और बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन दीस सॉर्ट ऑफ 5 गेम्स वी हैव अ फेयर आइडिया कि कौन से प्लेयर्स हैं इनको परसिस्ट करना चाहिए? So for example, we are really hoping for Shadab to be fit and Naseem Shah to be fit. I think those are two core members. So when they come in, which sort of two players do you see going out? Would Osama be one of them, clearly? And who else? Who else do you think would be two or three players who you think need to be dropped, so we can accommodate the likes of Naseem and Shadab? यार इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म क्योंकि देखो ना शाहीन रऊफ और नसीम ये तीन वर्ल्ड अभी जब वो अनफिट नहीं हुआ था तो दीज थ्री वर बेस्ट बॉलर्स अगर आपको लगता है कोई अनफिट है निगल है या इवन टू रेस्ट तो उसमें ये है कि मेरा मेरा तो आई वाज 1-2 साल से तो लगता था कि नसीम वाज द बेस्ट वाइड बॉल बॉलर जब जब शाहीन जब से अनफिट हुआ है अब ये देखना है कि अब उसकी इतना बड़ा रिहैब हुआ है सर्जरी हुई है हाउ ही इज गोना परफॉर्म इन पीएसएल तो आई थिंक इट्स गुड टू हैव ऑप्शन शाहीन रऊफ नसीम दीज आर टॉप बॉलर्स चौथे पे फिर कंपटीशन टाइट हो गया है क्योंकि आपके पास अब्बास आफरीदी हिट 2 6s ही इज अ गुड फील्डर he's bowling well. Zaman is good, and who else? Wasim is good. Wasim Junior. अब इसमें इस तरह आप सिलेक्शन करते हो कि आप ये नहीं करते कि you play all death bowlers. You need somebody to open the new ball. Right. New ball में very crucial है शाहीन और नसीम। इस सीरीज में गलती की कि हारिस से नई बॉल करा रहे थे उससे भी रन पड़ रहे थे। मेरी ये है कि भाई अगर शाहीन के साथ कोई पार्टनर नहीं है तो स्पिनर को दे दो बॉल इट ऑलवेज वर्क्स आउट तो yeah we have options and I think it's good to have 4 or 5 bowlers आपके डेथ बॉलर्स कौन से होंगे? शाहीन इज नॉट रियली परफॉर्मिंग इन no द डेथ, वो तो हमें पता है। जमान खान Zaman इज Khan नोन एज a specialist. uh, Rauf And is good still Naseem, if he comes back and if he's in the same form, Naseem used to be an all sort of form, शुरू में भी करा लेते हैं एंड में भी वसीम भी तो। अच्छा है
सर ये सारे अच्छे हैं, बाज भी करा तो काफी डिसेंट अटैक में। अच्छा, प्रॉब्लम मैं सोशल मीडिया पे सॉरी देख रहा था, तो वहां पे हारिस रऊफ की बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। तो जस्ट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ बीइंग अ मार्केटर, वी स्टडी अबाउट सॉर्ट ऑफ बायसेस, ह्यूमन बायसेस। तो एक अवेलेबिलिटी बायस होता है कि आप एक चीज को पकड़ लेते हो, जैसा एक प्लेन क्रैश हो जाता है तो उससे आपकी एक इमेज बन जाती है कि प्लेन ट्रैवल इज वेरी रिस्की। तो इस केस में ही हैड अ टेरेबल गेम इन डनिटन वेयर ही हैड 2 for 60 उसका था, इकोनॉमी रेट बहुत बुरा था। बट अदर देन दैट ही इज बीन फेयरली फाइन। आई मीन 0 for 29, 3 for 38, 2 for 34। तो That's इन द exactly what I कॉन्टेक्स्ट was ऑफ, going to say. Ki Haris Rauf is either feast or famine, you know. He had that really bad match. It reminds me a lot of Wahab Riaz, that he would be either great or terrible, you know, because there's also that one match where Rauf, I think in the series, took 3 wickets in an over, I think, or 2 wickets in an over. यस, No, when he's good, he's great. When he's bad, when he goes off the rails, it's very hard to stop things. But you know, unless we see someone better, I think you stick with him. I think one of the best things ever is that we have PSL coming. So we should not be in a hurry to declare this player should be in, this player should be out. Let PSL go exactly. ahead and let's see. That'll dictate a lot to us because remember, New Zealand series, okay, it's good to learn and things like that, but conditions in PSL, conditions in Pakistan are going to be far more similar to the conditions in the US and the Caribbean than what we saw in New Zealand, right? yeah. And so that's important. And then again, have your Saim, your Azam, your Farhan, all these guys playing multiple matches. There's not going to be that constant pressure, the scrutiny. They're going to play their own natural games. See who comes up. You know, you'll see who's in form. A lot of this is T20 is so much of who's in form at the right time. Yeah. So I don't think they should be in any quick hurry to announce who should be Yeah. in, who should be out with the coming. See how PSL goes. If someone comes up and looks outstanding, you know, then you defer to them. But I think it just gives us a better space within which to evaluate the players that we have already identified should be part of the team. Who wins out, let them battle amongst themselves, and we'll see. तो तो कौन से मिसिंग पीसेस हैं, कौन से क्वेश्चन मार्क्स हैं? बॉलिंग का तो आपने कर दिया, बता दिया कि भाई ये 3 4 हैं, इन्हीं में से कोई होगा। स्पिन डिपार्टमेंट क्लियरली वन ऑफ देम जिसके अंदर हमें तो हाँ, है मसला। अभी और तक अबरार का we have not seen. What is his deal? एग्जैक्टली, No? तो यार आई थिंक जो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना, ये बहुत बहुत पुरानी थिंकिंग है कि यार ये 3 बॉलर हैं, दे हैव टू प्ले। आप कोई भी टीम देख लो, दे वी हैव टू हैव 4 or 5 बॉलर्स, और फिर दे प्ले प्लेयर बेस्ड ऑन 100% फिटनेस, फॉर्म, बर्नआउट। लाइक क्लियरली हमारी आज की टीम तो बर्नआउट ही लग रहा है मुझे। वो हाथ पिटे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं ना, बैठना नहीं है। तो दिस इज अनहेल्दी। तो जो 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 मिसिंग लिंक है ना, सबसे बड़ा वो है एक तो स्ट्रेटेजी। अगेन आप दुनिया के Captaincy. 11 बैट्समैन खिला लो, आप फिर भी हारोगे अगर आपकी मेंटली इफ यू आर नेगेटिव, यू गोना लूज एवरी गेम। जो बिगेस्ट मिसिंग लिंक है ना बैटिंग में, है नंबर 5 6 7। और इसके मल्टीपल रीजंस हैं और मल्टीपल वेज टू फिक्स इट। तो अभी तक ये हुआ था कि इफ्तिखार वाज द ओनली वन हु वाज फायरिंग एट द बैक, और उसने कुछ मैच होम सीरीज में बचाए थे। इफ्तिखार वाज फ्लैट इन दिस सीरीज, तो उससे बहुत नुकसान हुआ है। पहले 2 वनडे में पाकिस्तान नीडेड 68 रन्स इन लास्ट 5 overs, which which can which was happen tough nowadays. but doable, Yeah, tough it's but doable. doable। अभी अफगानिस्तान ने 75 मारे इंडिया को when they were chasing 200, और गुरबदीन। इंडिया स्कोर 100 इन लास्ट 5। तो इफ्तिखार बैठ गए। अच्छा, अब देखो ये प्रॉब्लम जो है ना पूरे मुल्क का, यू नीड, आई होप कि पीएसएल में हसीब प्लेज एट 5, इफ्तिखार। और अब जो लोग बोल रहे हैं ना आजम खान ने क्यों खिलाया, द रीजन आजम खान वाज सिलेक्टेड बिकॉज देयर इज अ बिग होल इन मिडिल ऑर्डर, कि जो आ रहा है वो हर कोई ओपनर बन रहा है। हम्म, अब जबरदस्ती फकर को हमने नंबर 4 कर दिया, उसे पीछे ही करे जा रहे हैं, 3 पे था, 4 पे। तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट इज 5 6 7। और उसमें मेरा ओपिनियन ये था कि कोई अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन होता, मगर अगेन फॉर सम पीपल रिजवान इज लाइक कि ड्रॉप ही नहीं हो सकते, वरना एक ऑप्शन था रिजवान अगर रेस्ट करता, आप हसीब या आजम से कराते कीपिंग नंबर 5 6 पे, और ओपनर में आप किसी को भी करा देते, साइम को, या मगर ये वो उन्होंने किया नहीं। तो 5 6 7 इज द की। और दूसरा है बॉलिंग में स्पिन। स्पिन में ये कि शादाब डेफ शुड प्ले, आई थिंक ही विल प्रूव हिमसेल्फ इन पीएसएल। बैलेंस भी लाता है बैटिंग में ऑब्वियसली। एग्जैक्टली।
चाचा इज bowling well, you just need one more, एक कोई genuine spinner कहीं से। नवाज शादाब जब दोनों साथ खेलते हैं ना, प्रॉब्लम वही होती है बाबर रिजवान वाली, कि वो दोनों ठीक स्पेशलिस्ट है, नहीं है दोनों, कंटेनर है भाई, वी नीड अ प्योर, विकेट टेकर्स नहीं है, हाँ। क्या, एक स्पिनर तो कम। मैं वही एग्री करता हूँ, अनलेस अबरार इज इंजर्ड व्हिच वी डोंट नो अबाउट, उसका समझ नहीं आया कि पूरी ऑस्ट्रेलियन सीरीज नहीं खेला, पूरी ये सीरीज निकल गई। हम तो वर्ल्ड कप से लेके चल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यार अबरार को मौका दो, तो अगर आप मौका ही नहीं दोगे उसको The तो फिर very definition of a mystery spinner, क्या। because we don't know. He's a mystery. No, he हाँ, was apparently he went to Australia warm up and fit हुआ है, then he was sent back. So he was not fit to play New Zealand. Well, सही I सही। think another thing also is Shaheen does. I mean, look, he's young, but he needs to learn how to be Yeah, a better captain. Just one very quick example that is so clearly obvious in the fourth T20, we had New Zealand on the ropes. They were 30 for 3, and Shaheen was bowling okay. He got wickets, but he was being aggressive, and so he came back for his third over. yeah, Now, when you exactly. come back as an opening bowler for the third over, there's only one purpose and one purpose only. You want to get another wicket, right? विकेट, He was not coming to bowl a maiden over. He was not coming to bowl a few singles. He wanted to get a wicket. So when you're bowling to get a wicket, you need to have an attacking field. He had a man in the slips. What does he do before he bowls his first ball? He takes a man out from the slips and puts him to deep mid wicket. The very next ball, the ball goes to a vacant slip cordon. Then he chases that and puts the guy back in. So if we can see this, and we are nobody. I mean, what are we? We play club cricket at best. If we can sit here and see this, how can the captain of the Pakistan team not see this? How can the management not see this and talk to him and say, "Yad, what?" I mean, come on. It was a brave decision to bowl a third over. I'm all for that. Be aggressive, but then back yourself when you're being aggressive. There's no. It's either you're in or you're out. You can't do this half measure stuff. I'm sorry. And these are things that he's smart, so he knows it's just going to come with time. I think they really need to keep a very close eye on his captaincy during PSL, because these are the kind of things that win or lose matches for you. पीएसएल का तो रिकॉर्ड उसका पिछले 2 सीजन से अच्छा जा रहा है, पार्टली हाँ, बिकॉज उसकी टीम भी बहुत अच्छी है। बट आई एग्री विद यू, आई थिंक अब हमने डिसीजन ले लिया है। वी few of us we felt that Rizwan might have been a better captain, but up if they've backed Shaheen, we have to give him time, and hopefully these few months that we have before the World Cup, ये जो हाँ. सीरीज आ रही हैं इनके अंदर, he learns from his mistakes and he grows. And जिस तरह के लास्ट मैच promoting में him. we did see an improvement, Yeah. थोड़ी नॉवल अप्रोच थी, आई डोंट नो उसकी अपनी थी मैनेजमेंट की थी, तो होपफुली उससे उससे वो लेसन्स लर्न करे। Hopefully, he doesn't promote himself in the batting order all the time as well. I mean, he needs to learn to bat a little bit better before he does that. It worked in PSL, but in international cricket, he's a tullibaz, so you need to, when you have good batsmen behind you, let them do what they need to do. राइट राइट राइट, आई थिंक और उसकी यार, अगेन पीएसएल के अंदर एक दो इस तरह Worked. की इनिंग्स थी, Take the five, I remember. उससे अब Yeah. उसने अपने आप को समझने लग गया है, बट हाँ. यू राइट, ही नीड्स टू रियलाइज हिज सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस। और यार, और एक और चीज है कि लोग इसको इतना ज्यादा मसला बनाया हुआ है। थॉट प्रोसेस ये है कि अगर बाबर रिजवान नहीं जाते ना इस सीरीज में, या मैं तो कहता हूँ 2 सीरीज ना खेलें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि बाबर के बगैर टीम बैठ जाएगी इन एनी फॉर्मेट, दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो अफगानिस्तान से हारे थे ना, इसलिए दोनों हाँ, बैठे हुए थे तुम। वो तो चलो, वो भी मुश्किल पिच थी, नए प्लेयर थे, नए प्लेयर में हार हम्म, सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मगर वर्ल्ड कप से पहले द डिबेट इज कि रिजवान, और जैसे बहुत से हम लोग समझते हैं कि जब ये साथ खेलते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वन डाउन बाबर से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वोट करा लो। प्रॉब्लम ये होती है जब ये दोनों साथ होते हैं। और रिजवान ने खेला अच्छा है, मगर वही कि अब उसके जो फैंस है वो कहेंगे अगर रिजवान नहीं करता तो हम तो 100 आउट हो जाते। हो सकता है, अगर भाई अगर टीम इतनी फारिग है, हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है, तो फिर खिलाते रहो इन दोनों को। तो आई थिंक इट्स गुड टू रिमूव देम। तो उसमें एक क्रिटिक्स भी चुप हो जाएंगे ना, जब जो हम लोग कहते हैं साइम को आप फखर से को ओपन कराओ, साइम से आप जितने भी आपके नाम याद आते हैं सबको खिला दो, रिजवान की जगह हसीब को खिला दो, आजम को खिला दो, तो लोग फिर मुंह बंद हो जाएंगे ना लोगों के। क्योंकि हो ये रहा है कि हम वर्ल्ड कप में जीते और काफी सीरीजें हारे, अभी भी हार गए ना, ये 5 सारे मैच खेले हैं, 4-1 हो गया। तो अगर नए प्लेयर होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि फिर लोग फिर वो क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा ना। हम्म। तो बाबर एक्चुअली इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज स्ट्राइक रेट एंड ही डिड। रिजवान ने आई थिंक वो जिसमें 90 किए उसमें किसी और ने रन नहीं किए थे, ये राइट, प्रॉब्लम हो गया था। तो इट्स वेरी आखिरी गेम में थोड़ा इंटरेस्टिंग। बाबर ऑफ करने लगा था।
वो कुछ पिच भी थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, और हाँ, मगर वो बाबर वाज, यार वो अजीब, ही वाज ट्राइंग टू स्लॉग, मुझे लगता है वो हम्म, पावर हिटिंग ट्राई कर रहा था, ही कुडंट हिट। वो ही उसकी गेम नहीं है। हाँ, मैंने आज तक बाबर को उससे खेलते हुए देखा ही नहीं कि वो 3 कैच दे। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रैक्टिस पावर हिट, और वो नहीं लग रही थी उससे, हाँ, मिस ही कर रहा था। प्लेज नेचुरल गेम या। राइट, राइट, राइट। चलें जी, ओवरऑल वी होप कि आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। अगेन, लेसन्स टू बी लर्न। We are all disappointed, obviously, but at the same time, जिस तरह के आसिफ ने अपने इंट्रो में बात की थी, let's look at the bigger picture. Hopefully जो हमें कुछ अच्छे lessons मिले हैं इस सीरीज से, और जो हमें पता चला है कि किन वजूहात की वजह से हमारे ये फेलियर्स हुए हैं, उसको हम रेक्टिफाई करें गोइंग फॉरवर्ड. And again, the long term sort of objective should obviously be the World Cup. And these are the same core group of players who have done well for us in the past. Mhm. So we're still optimistic. And the good thing is, World Cup is in our backyard. Cricket Clinic के backyard में है. So who knows? We might end up going to the stadium for a few games to cheer them as well. So that would be great. If that happens. तो इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे. Thank you very much. पाकिस्तान जिंदाबाद. Not bad.